चलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है कि आप लोगों को? एक बार फटाफट से बताएंगे, कैन यू हियर मी? जल्दी जल्दी लाइव आएंगे, अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट से लाइव आने के लिए। वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू पीपल डूइंग? कैसे हो आप लोग? कैन यू हियर मी क्लियरली? फटाफट से अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे वी आर लाइव। जल्दी 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 से, मिस नहीं करना है। ओके चल, बच्चे आते रहेंगे, एकदम मस्त है। ओके ग्रेट। होपफुली जो होमवर्क मैंने तुम लोगों को दिया था वो कर लिया क्या आप लोगों ने? मैंने बताया था आपको स्टेप्स फॉर क्लासिफिकेशन वाला जो था वो होमवर्क करना था आप लोगों को। स्टेप्स फॉर क्लासिफिकेशन होमवर्क करना था आप लोगों को। क्या वो होमवर्क आप लोगों ने किया? क्या स्टेप फॉर क्लासिफिकेशन वाला होमवर्क किया क्या? अच्छा, आपको मदद मिल रही है क्या? राइटिंग प्रैक्टिस से मदद मिल रही है क्या? आपको हेल्पफुल हो रही है कि राइटिंग प्रैक्टिस? 2 सेशंस हुए हैं अपने, ये तीसरा सेशन है जहां पे हम लोग अपने जो 2 बचे हुए क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 2 के वो कंप्लीट करने वाले हैं। बट देन इज इट गेटिंग हेल्पफुल फॉर यू पीपल? मजा आ रहा है तुम लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस से? तुम लोगों को समझ में आ रहा है कितना लिखना है, क्या लिखना है? क्या तुम लोग ये फील कर पा रहे हो कि हाँ तुम लोगों को ये एग्जाम है बहुत काम में आने वाला है कुछ पीरियड के लिए लिखने के लिए और ये सारी चीजों के लिए? यस, ओके। होपफुली तुम लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है, तुम लोगों को मजा आ रहा है, तुम लोगों को हेल्पफुल रह रहा है ये। ग्रेट 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 ग्रेट। चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारे सेशन के साथ आज। ग्रेट, अच्छी बात है। डेटा वैलिडेशन एंड इट्स टाइप, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा वैलिडेशन एंड इट्स टाइप? सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या है। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। डेटा वैलिडेशन is a crucial component of any data management process whether it is about collecting information in the field, evaluating data, or preparing to deliver data to stakeholders. एंड ऑल्सो रिमाइंडिंग यू वन मोर थिंग दैट इज फ्रॉम टुडे, जो भी बोध ग्रुप देने का काम कर रहे हैं, जो भी सारे बच्चे हैं जो बोध ग्रुप देने का काम कर रहे हैं, यस आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप लोगों का आज से ग्रुप 1 स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे हम लोग मिलने वाले हैं हर सर के साथ, और उसी के बाद तुरंत तुरंत हम लोग मिलने वाले हैं टैक्स के लिए भी। तो ऐसे तुम्हारे स्केड्यूल्स रहने वाले हैं, आप लोगों को एकदम से ध्यान से अटेंड करने का काम करना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू अटेंड दी क्लासेस एज वेल ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्स ऑल्सो, राइट? तो वो भी तुम लोगों को करके लेना, क्योंकि इट विल बी अ प्रैक्टिस सेशन, उन लोगों के लिए ही काम में रहेगा जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, जिन लोगों को पता है कि इसमें क्या है करके। प्लस ऑल्सो बाकी के भी जो बच्चे हैं, प्लीज मैं वापस से रिक्वेस्ट करूंगी सारे बच्चों को कि आप लोगों को लाइव अटेंड करना है ये राइटिंग प्रैक्टिस, तो ही फायदा होगा ये राइटिंग प्रैक्टिस का, वरना आप लोगों को कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। बाद में आप रिकॉर्डेड देखेंगे और रिकॉर्डेड देखने के बाद बस जो लिखा हुआ है वो लिखने का काम करेंगे, तो देयर विल बी नो सेंस। आप लोगों को लाइव साथ में ही देखना है, तो जो बाद में रिकॉर्डेड देखने का काम कर रहे हैं ये लाइव सेशन को, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट देम स्टार्ट ज्वाइनिंग अस लाइव, डोंट वॉच रिकॉर्डेड, स्टार्ट ज्वाइनिंग अस लाइव। ये आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है ना? लेट्स गो। और प्रिपेयरिंग टू डिलीवर डेटा टू स्टेक होल्डर्स। इफ द इनिशियल डेटा is not valid, the outcomes will not be accurate either. This goes to directly a chapter number 1, that is if you have a data, good quality of data, then obviously you will be able to take the decisions in a proper way as well. ठीक है? No, going further,
The format and content of the data files the format and content of data files will determine what can be done with data. What can be done with data. Using visualization criteria, to purify data before to usage, mitigates garbage in, garbage out problems. Garbage in, garbage out problems. Types of data validation. Types of data validation. The very first is data type check. Data type check. It verifies that the entered data, it verifies that the entered data has the appropriate data type. Has the appropriate data type. For instance, a field may only take numeric values. If this is a case, the system should reject any data containing other characters such as letters or special symbols. Symbols. Next, this is your first. Second is your code check. Second is your code check. It verifies that a field's value is picked from a field's value is picked from a legitimate set of options, or that it adheres to specific formatting requirements. Specific formatting requirements.
For instance, it is easy to verify the validity of a postal code by comparing the validity of postal code by comparing it to a list of valid codes. इसका पीडीएफ आज तुम लोगों को तुम्हारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा. अगर कुछ मिस हुआ रहेगा तो वो आप लोग एप्लीकेशन से लिखने का काम कर सकते हो. ठीक है, कुछ मिस हुआ रहेगा तो आप लोगों को मिल जाएगा. तो डू मेक श्योर कि आप लोग अच्छी तरीके से उसको क्या करेंगे, यूटिलाइज करने का काम करेंगे, यूज करने का काम करेंगे. ठीक है, तो यू विल गेट इट डाउन, है ना. लेट्स गो आगे. ये सेकेंड था तुम्हारा कोड. थर्ड चेक, दैट इज रेंज चेक. रेंज चेक. A range check determines whether or not input data falls inside a specified range. Specified range. Example, latitude and longitude. For example, latitude and longitude. Outside of this range, values are invalid. Outside of the range, values are invalid. Values are invalid. Format check. Numerous data kinds other to a set format. Data columns that are kept in a fixed format. Such as are popular use case. Done. Next, fifth, consistency check. Consistency check. A consistency check is a form of logical check that verifies that the data has been input in a consistent manner. In a consistent manner.
checking whether a package, बेटे कंटेंट में नोट्स मैंने डाले हुए हैं। S8 में अगर आप जाएंगे, आपने कोर्स परचेज किया हुआ है क्या? जो फ्री कोर्स आप लोगों को मिल रहा है 1 रुपीज़ का जो फ्री कोर्स है, तो उसमें आप लोगों को सारे नोट्स मिलेंगे। मैं अभी फिलहाल जो आपको बोल रही हूँ, क्योंकि डीए स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का, इसीलिए डीए के नोट्स आप लोगों को कंटेंट सेक्शन में मिलेंगे। फर्स्ट चैप्टर का मैंने डाला हुआ है, जो सेकेंड चैप्टर आज कंप्लीट होने वाला है, तो वो मैं आज डालने वाली हूँ, है ना? तो आज आपको ये मिल जाएगा, इसलिए मैंने बोला आज आपको ये मिल जाएगा। ये जो अभी चल रहा है वो स्पेसिफिकली आज मिलेगा आपको, आज यू आर गोइंग टू गेट टुडे। हाँ, whether a package's delivery date, whether a package's delivery date is later than its shipment date. Is one example. Is one example. Is one example. Next, यूनिकनेस चेक कैसे चेक करेंगे तुम लोग? तुम्हारे आधार कार्ड या पैन कार्ड से सम डेटा लाइक पैन, और ईमेल आईडीज are unique by nature. Are unique by nature. These fields should typically contain unique items in a database. A uniqueness check guarantees that an item is not put into a database numerous times. And here we are done with this question. डन? लाइव स्ट्रीमिंग आवे डन? अपना ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म। एक बार फटाफट से बताएंगे समझ में आया क्या आप लोगों को? लेट्स गो आगे। जो आएगा आगे। Done. So the next very question is, what do you mean by data cleaning and explain its steps? What do you mean by data cleaning and explain its steps? So चलो शुरुआत करते हैं। Let's go. Data cleaning is the process of correcting or deleting inaccurate, corrupted, improperly formatted, duplicate,
or insufficient data from a data set. Insufficient data from a data set. When several data sources are combined, there are numerous chances for data duplication and misleading and misleading. Incorrect data renders outcomes and algorithms untrustworthy. 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 Done. Despite their apparent accuracy, their apparent accuracy, data cleaning is different from data satisfaction. Oh, sorry, data transformation. So sorry. Data cleaning is a process of removing irrelevant data from a data set. Irrelevant data from a data set. The process of changing data from one format to another is known as data transformation. Is known as data transformation. Done. Let's go next, that is steps for data cleaning. Steps for data cleaning. Step 1, removal of duplicate and irrelevant information. Removal of duplicate and irrelevant information. Step 2, fix structural errors. Fix structural errors. Step 3, filter unwanted outliers. Filter unwanted outliers. Step 4, handle missing data. Step 4, handle missing data. Step 5, validation
and QA. Validation and QA. डन, लाइव स्ट्रीमिंग डन। तो ये थे तुम्हारे क्या स्टेप्स, बट इतना ही लिखेंगे कि अपन लोग नहीं, इसके आगे भी अपने को लिखना है। इट इज नॉट डन विद कंप्लीट स्टेप्स एंड एवरीथिंग, आगे भी इस पे लिखना है अपने को। दैट इज, अब इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन करना है। दिस इज जस्ट अ मेथड एंड अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन, जहाँ पे तुम लोग एग्जामिनर को बता रहे हो कि हाँ तुम लोगों को स्टेप्स पता है, अब तुम लोग वो स्टेप्स को एक्सप्लेन कर रहे हो। कभी कभार तुम लोग क्या कर सकते हो, लाइक टी डायग्राम भी बना सकते हो, फॉर एग्जाम्पल स्टेप्स बोल के, स्टेप 1, स्टेप 2, यहाँ पे स्टेप 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। तो तुम लोग पहले डायग्राम फॉर्म या ट्री फॉर्म में भी बता सकते हो और उसके बाद एक्सप्लेन कर सकते हो। सारों को नहीं करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, 3 क्वेश्चंस है, तीनों में तुम चार्ट बना लेंगे, ऐसा नहीं है। पहले 3 क्वेश्चन को देखो, 3 क्वेश्चन को देखने के बाद समझो अपने दिमाग में कि भाई क्या इसका क्या बोलते हैं, क्या आप लोगों को इसका आंसर लिखना है, मतलब कैसे एक्सप्लेन करना है, किसको चार्ट फॉर्मेट में पहले एक्सप्लेन करके फिर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देना है। तीनों में से कोई एक हाथ को तो लिख ही दो। और वापस से, जैसे अभी इंटरनल स्टूडेंट्स को भी पता है कि दिसंबर अटेम्प्ट का तुम्हारा है, तो भाई हाई पॉसिबिलिटीज़ है वापस से कि वो बात करेंगे अपन कौन से चैप्टर्स की हाई पॉसिबिलिटीज़ है आने की एक बार ये होने के बाद। बट देन तुम लोगों को तो ऑलरेडी पता ही है कि कौन से हाई पॉसिबिलिटीज़ है, कौन से चैप्टर के आने की या कौन से क्वेश्चंस के आने की, राइट। तो अपने को कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। लेट्स गो विथ स्टेप 1, लेट्स एक्सप्लेन इट नाउ। फ्लो चार्ट वगैरह यूज कर सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन के प्रोसेस एक्सप्लेन, फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं, बट जैसे मैंने बोला पहले एक्सप्लेन, फ्लो चार्ट बनाने का, लेकिन उसमें उसको बाद में एक्सप्लेन भी करने का, नहीं तो तुम छोड़ के आ जाएंगे, वो मत करना। नहीं तो बहुत लोग इसे छोड़ के आ जाएंगे, बोलेंगे कि अरे मैम ने तो बोला था, तो वैसे उसको भले ही फ्लो चार्ट में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको चार्ट वे में बनाना, ऐसे बनाना है, ऐसे भी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट शुड बी इन अ स्पेसिफिक वे। अच्छा दिखने वाला है तो ट्री फॉर्मेट अच्छा दिखता है या फ्लो चार्ट भी अच्छा दिखता है, उसके अलावा कोई दूसरे चार्ट्स अच्छे नहीं दिखते तो कुछ भी मत करना। स्टेप 1 क्या बोलता है, दैट इज रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट एंड इररिलेवेंट डेटा, एलिमिनेट unnecessary observations from your data set, such as duplicate or irrelevant observations, duplicate or irrelevant observations. Deduplications is one of the most important consideration for this procedure. Observations are deemed irrelevant when they do not pertain to the specific topic you are attempting to study. You are attempting to study. Step 2, that is fix structural errors, जो तुमने ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है।
यहाँ पे अच्छा सुनो, एक चीज, यहाँ पे पूरे स्टेप का नाम लिखना है एंड देन वी नीड टू मूव फॉरवर्ड. तो व्हेन, सारे स्टेप्स का नाम लिखना है एक्सप्लेन करने के टाइम पे भी. व्हेन मेजरिंग और ट्रांसफरिंग डेटा, when measuring or transferring data, you may detect unusual naming standards, typos, unusual naming standards, unusual naming standards, typos or wrong capitalization. Or wrong capitalization. These contradictions may lead to mislabeled classes or group. अच्छा, और एक चीज आप लोगों के लिए, बहुत अलग अलग चीजें आने वाली है, बहुत अलग अलग थिंग्स होने वाले हैं आप लोगों के लिए. ये पर्टिकुलर चीजों, मतलब ये सारे, जैसे अभी राइटिंग प्रैक्टिस हो रहा है तो आगे भी बहुत सारी चीजें आती रहेंगी. तो आप लोगों को बस क्या करना है, आप लोगों को बस अपडेटेड रहना है. बहुत सारे लोग ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप के इंटरनल इसमें तो एडेड रहेंगे, लेकिन जो सक्सेस बैच के, मतलब जो विश्वास सीरीज से ज्वाइन हुए हैं, हमारे एसएच सीरीज से ज्वाइन हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी रहेंगे. तो आप लोगों को बस व्हाट्सएप ग्रुप को ऐड होना है, वो याद रखना, क्योंकि जैसे राइटिंग प्रैक्टिस अभी चल रहा है तो एडिशनली मेनी मोर थिंग्स आर गोइंग टू कम फॉर यू पीपल. तो ज़रूर इसको अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि बहुत प्लान्स चल रहे हैं तुम्हारे लिए, सो दैट यू कैन क्लियर योर एग्जाम्स. डन? ठीक है, चलो लिखेंगे. फॉर इंस्टेंस, NA and not applicable may both be present but should be examined as a single category. As a single category. Step 3. Occasionally, you will encounter observations. Occasionally, you will encounter observations that at first look do not appear to fit inside. Do not appear to fit inside. Do not appear to fit inside the data you are evaluating. The data you are evaluating. If you have a valid course to eliminate, if you have a valid course to eliminate,
an outlier such as erroneous data input, doing so will improve the performance of the data you are analyzing. You are analyzing. You are analyzing. Step 4. Many algorithms do not accept missing values. Hence, missing data cannot be ignored. There are several approaches to handle missing data. As a first alternative, the observation with missing values may be dropped but doing so may result in the loss of information. But doing so will result in loss of information. As a second alternative, the missing numbers may be entered based on other observations. Based on other observations. And the very last step, that is step 5. Validation and QA. Validation and QA. As part of basic validation, one should be able to answer the following questions. First, does the data make sense? Does the data make sense? B, does the data adhere to the regulations
applicable to its field. Next, does it verify or contradict your working hypothesis, or does it shed any light on it? Does it shed any light on it? Next, can data patterns assist you in formulating your next theory? And last, if not, is this an issue with data quality? Is this an issue with data quality? So yes, here we are done with the topic of chapter 2. We have done with 2 questions for the day. So in total we have done 4 questions of chapter number 2, writing over here, right? If I remind you once again, we have completed our chapter 1 also. In chapter 1 we have completed how many questions? We have completed 4 questions, in which 5th question was homework for you, right? So यहाँ पे कितने questions हो गई है? कितने questions हो गई है? 5 questions हो गए. उसी के साथ साथ यहाँ पे दैट इज ये तुम्हारा चैप्टर 2 है, जिसमें अपन लोगों ने 4 क्वेश्चंस करे हैं और एक 5th क्वेश्चन तुम लोग लेंगे होमवर्क के लिए. क्वेश्चन नंबर 5 विल बी बेनिफिट्स ऑफ डेटा क्लीनिंग. ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा. तो ऐसे करके अपने 10 क्वेश्चंस पूरे होने का काम हुआ है फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर मिला के. ठीक है ना? डन है क्या? डन. So let's go to the third topic, third chapter के लिए जो आएंगे. This is your third chapter, that is data presentation, visualization and graphical presentation. ये तुम्हारा थर्ड चैप्टर है. थर्ड चैप्टर में भी मैंने 3 से 4 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए निकालने का काम किया हुआ है, सो दैट आप लोगों को इजी हो जाएगा. उसी के साथ साथ एक बार मैं आप लोगों को एक रिमाइंडर दिला देती हूँ. ये रहा आप लोगों का टाइम टेबल. मंडे ट्यूसडे को आप लोगों का रहने वाला है ग्रुप 1 के लिए. अभी मैं बात कर रही हूँ, अकाउंट्स रहने वाला है 7 बजे. मंडे ट्यूसडे को टैक्स भी रहेगा 9 बजे. तो आज और कल में आप लोगों को मिलना है, आना है, अकाउंट्स एंड टैक्स अटेंड करके जाना है. जहाँ पे आप लोगों का प्रैक्टिस ही होने वाला है वो भी याद रखना. फिर वेडनेसडे थर्सडे को हम लोग मिलने वाले हैं बिजनेस लॉ के लिए, अगेन शाम में 7 बजे CMA शिक्षा सिंह मैम के साथ. एंड नेक्स्ट आएगा फ्राइडे सैटरडे को हम लोग मिलने वाले हमारे द वन एंड ओनली कॉस्टिंग क्वीन CA श्रुति अग्रवाल मैम के साथ 7 बजे शार्प. तो आप लोगों को भूलना नहीं है, अटेंड करना है, जो बोथ ग्रुप देने का काम करने वाले हैं. और ग्रुप 2 तो आप लोगों को पता ही है कैसे चलने वाला है. मिलने वाले हैं अपन लोग 11:15 बजे के आसपास फॉर डेटा एनालिटिक्स के राइटिंग प्रैक्टिस के लिए. और उसी के साथ साथ सेम जैसे ये खत्म होता है 1 बजे आप लोग मिलने वाले हैं SM के लिए प्रोफेसर चैतन्य भुजबल सर के साथ. सो लेट्स गो. योर इज योर थर्ड चैप्टर. एक क्वेश्चन तो अपना क्या हो जाएगा, लिख के कंप्लीट हो ही जाएगा. तो चलते हैं आगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं.
क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो है वो छोटे छोटे, वो बड़े बड़े नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो सिर्फ क्या लिखा हुआ है, डेटा प्रेजेंटेशन एंड नहीं है, सो सॉरी, डेटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, डेटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर। अब इसमें क्या लिखना है, इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसमें आप लोगों को डेटा प्रेजेंटेशन का मीनिंग लिखना है प्लस उसके स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स लिखने का काम करना है, उसके स्कोप्स और ऑब्जेक्टिव लिखने का काम करना है। तो सबसे पहला आता है तुम्हारा इसका मीनिंग, तो लिखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय डेटा प्रेजेंटेशन। Data presentation architecture, that is DPA, is a set of skill, अरे तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो ना, छोड़ो ना तुम लोग, is a set of skills that aims to identify, find, modify, format and present data in a manner, and present data in a manner। शुरुआत करी क्या तुम लोगों ने, शुरुआत करी क्या तुम लोगों ने लिखने के लिए, शुरुआत करी। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ थर्ड चैप्टर, थर्ड चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। थर्ड चैप्टर तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8B में आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 8B में आ सकता है, राइट। तो डेटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर इज अ सेट ऑफ स्किल दैट एम्स टू आइडेंटिफाई, फाइंड, मॉडिफाई, फॉर्मेट एंड प्रेजेंट डेटा इन अ manner that ideally conveys meaning and provide insights according to Kelly, लाउट या जो भी हम बुलाएंगे, DPA is a rarely applied skill set critical for the success and value of बिजनेस इंटेलिजेंस। ये क्या होता है ये तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, एंड ये तुम लोगों को तुम्हारे चैप्टर नंबर 4 में आने का काम करता है। BI और उसके मेथड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में अपने आया हुआ है, ठीक है। ये होने के बाद लिखेंगे ये मीनिंग था, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ही नहीं पूछा है, क्वेश्चन में क्या बोला है, डेटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट ऑन डेटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर, वो भी आ सकता है। तो भाई फिर तो क्या ही समझेगा क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे और इंट्रोडक्शन के साथ साथ तुम लोग क्या लिखने वाले हो, उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप लिखने का काम करेंगे। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ DPA, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ DPA, utilize data to impart information in the most efficient method, feasible, that is इसी के अंदर ब्रैकेट में provide pertinent
timely, and comprehensive data to each audience participant in a clear and reasonable manner. That conveys important meaning, is actionable, and can affect understanding, behavior, and decisions. Understanding, behavior, and decisions. ये तुम्हारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है. सेकेंड, to utilize data to deliver information as effectively as feasible that is minimize noise, complexity, and unneeded data or detail based on the demand and task of each audience. Demand and task of each audience. ठीक है, डन. ये तुम्हारा क्या था? ऑब्जेक्टिव था. आगे भी और क्या लिखेंगे? क्या लगता है तुम लोगों को क्या लिखना चाहिए इसके अंदर? और बोलो, क्या लगता है तुम लोगों को इसके अंदर और क्या लिखना चाहिए? ऑब्जेक्टिव्स तो लिख लिए, और क्या लिखना चाहिए? जो मैंने तुम लोगों को बोला था, स्कोप लिखेंगे अपन लोग इसके अंदर. तो स्कोप ऑफ डीपी है, स्कोप ऑफ डीपी है, defining significant meaning required by each audience member in every scenario. इन एवरी सिनेरियो. क्या बात है यार, स्कोप भी लिखना चाहिए, स्टेप भी लिखना चाहिए. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सेकेंड, obtaining the proper data. Obtaining the proper data. That is focus area, historic reach, extensiveness, level of detail, etc. Third, determining the needed frequency of data refreshers
that is the currency of the data, the currency of the data. Next, determining the optimal presentation moment, that is the frequency of the user needs to view the data, to view the data. कौन से डेटा के बाद क्या है, इतना डेटा है यहाँ पे, ये रिफ्रेशर्स, अगर इसकी बात करिए थर्ड पॉइंट की तो इट इज डेटा रिफ्रेशर्स. फिफ्थ, using suitable analysis category, visualization data refreshers and other display styles, other display styles. Next, sixth point, developing appropriate delivery techniques for each audience member based on their job duties, location and technological access, and technological access. स्टेप्स को तो डिटेल में लिख लेंगे क्या, स्टेप्स कौन से स्टेप्स है. पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट्स. सेकेंड, डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग. चलो तुम लोगों को मतलब देख के अच्छा लग रहा है कि तुम लोगों को ध्यान में है कि तुम लोगों ने और क्या लिखना चाहिए, मतलब यू नो दैट व्हाट इस टॉपिक में क्या क्या इंक्लूडेड है वो तुम लोगों को पता है, तो दैट इज गुड, इट इज गुड, वेरी गुड. डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग. नेक्स्ट क्या है, चूज विजुअलाइजेशन टेक्निक. फिर नेक्स्ट, सिलेक्ट टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स. और याद रखो स्टेप्स है तो आप लोगों को क्या बोल रही, सीक्वेंस में ही लिखना जरूरी है. स्टेप्स है तो सीक्वेंस में लिखना बहुत जरूरी है. फिफ्थ, क्रिएट द आर्किटेक्चर. क्रिएट द आर्किटेक्चर. नेक्स्ट, implement and test. And last है optimize and maintain. इसको explain करना है. Optimize and maintain.
डन है. सो हियर वी आर डन विद दिस टॉपिक एज वेल. मतलब टॉपिक नहीं, ये क्वेश्चन से हो गया है. और नीचे क्वेश्चंस है जो मैंने आप लोगों के लिए निकाले हुए, 4 क्वेश्चंस तो और निकाले हुए हैं. थोड़े से और निकालने के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ, देख रही हूँ, तो और थोड़े से एडिशनल एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम लोग लिखने वाले हैं. तो यहाँ पे वी हैव स्टार्टेड विद थर्ड चैप्टर का एक आंसर हो गया है. आज मैं चैप्टर नंबर 2 का अपलोड करने वाली हूँ तुम्हारे लिए हैंड रिटन नोट. एंड कल वापस हम लोग मिलेंगे चैप्टर 3 के लिए. कल पूरा ट्राई करना है कि चैप्टर 3 अपना पूरा का पूरा लिख के क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड विद दी 4th चैप्टर एज वेल. सो यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर द डे. 1 बजे आप लोगों का रहने वाला है चैतन्य सर का लेक्चर फॉर एसएम का राइटिंग प्रैक्टिस. और मिलेंगे शाम में ग्रुप 1 के लिए, अकाउंट्स के लिए. एंड उसके बाद मिलेंगे हम लोग किसके लिए, टैक्स के लिए. तो भूलेंगे नहीं. प्लस ऑल्सो वापस एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड नहीं हो अभी तक, तो जो भी बाद में लेक्चर्स देखने का काम कर रहा है वो जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे. आपको स्क्रीन पे स्कैन भी दिखता रहेगा, उसी के साथ साथ गूगल फॉर्म भी आप लोगों को भरना है, उसको भी भूलेंगे नहीं. सो दैट लेटर ऑन यू वॉन्ट, मतलब पछताएंगे नहीं तुम लोग. अभी सुनेंगे तो अच्छा रहेगा. और यस, दैट्स इट. लॉट्स ऑफ लव, कीप स्टडीइंग, बाय बाय. और लेक्चर होने के बाद जरूर कमेंट करना कि आप लोगों को ये राइटिंग प्रैक्टिस कितनी हेल्पफुल हो रही है. लॉट्स ऑफ लव.